So very good evening to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very, very important topic, and that is the preamble of the Indian Constitution. I'm sure you must have read something about preamble. So we will discuss each and every important thing in this regard. Okay. So we will discuss with the help of question and answer in detail. Okay. So if I'm audible, visible, please write yes in the comments so that we can begin our class. मेरी आवाज आ रही है? Okay, so if I'm audible, visible, please write yes in the comments so that we can begin with the class. Yes, fine. तो हम लोग आज की क्लास में यही जानेंगे, प्रीएम्बल के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है? And I will be discussing in both the language. तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस कर लूंगा ताकि समझ जाओ, ठीक है? So let us begin. First of all, please subscribe to the channel if you have not subscribed yet. तो सब्सक्राइब करके गो टू द प्लेलिस्ट, ठीक है? गो हेयर, तो इसमें बहुत सारे मैंने क्लासेस किए हैं और अगर आप यहाँ जाओगे, इफ यू गो टू हेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सिंस जनवरी, सो यू कैन गो एंड वॉच इट. आप व्यू फॉर प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, क्लिक ऑन व्यू फॉर प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट ऑल दोस वीडियोस, ठीक है? तो जा करके आप देख लो, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, and because this will be helpful in the upcoming exams like Jamia, MHCT and different exams, so go and watch it. So let us begin with the first question. So we'll be discussing about preamble in detail. तो हम लोग preamble के बारे में डिटेल में जानेंगे. So let us begin. The concept of preamble as an introductory statement to a constitution was borrowed from where? USA, Australia, South Africa or Britain? Yes, good evening Pranshi Govil, Priyanshi Goel, Adrija, Anusha, good evening guys. अर्शनूर, गुड इवनिंग. तो आपको पता प्रीएम्बल जो होता है ना, वो एक तरह का क्या है, जैसे एक बहुत फेमस स्कॉलर ने डिफाइन किया है, इट इज कंसीडर्ड एज होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम स्कॉलर हैज डिफाइंड लाइक दैट, सम हैज कॉल्ड इट एज समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ लोग समरी कहते हैं, कुछ लोग जिस्ट कहते हैं, व्हिच टेल्स यू द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब लफ्ज वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रीएम्बल्स के लिए कि तो भाई ये जो भी कह लो, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह लो. तो इस आइडिया को जो कि प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है ना, वी हैव प्रीएम्बल व्हिच टेल्स द जस्ट इंट्रोडक्शन और होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. This idea we have borrowed from somewhere because I have told you we have discussed a separate clause on borrowing features of the Indian Constitution, where we had discussed that we have borrowed, the Indian Constitution has borrowed things from different places. इस पर मैंने खास से क्लास भी लिया है, तो आपको पता होना चाहिए. उसमें मैंने बताया भी था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से बोरो किए हैं. इसका आपको आंसर बताना है. वेटिंग फॉर द रिस्पांस. आई हैव गॉट ओनली वन आंसर. यस प्रांशी गोविल, यू आर राइट. व्हाट अबाउट अदर्स? यस, गुड आफ्टरनून कुशाग्रा, गुड इवनिंग. व्हाट इज द आंसर प्लीज एवरीवन? द राइट आंसर इज, और ये मैंने पहले पढ़ाया भी है, यूएसए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वी आर हैविंग द कांसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल. ओके, so that is what you should know. Yes Kushagra, you are also right, is the right answer. तो अगर आप देखोगे मैं इस क्लास में, खास के ये वाली क्लास में, I had discussed it. आप जाना YouTube पे सर्च करना, just go and search this on YouTube. Borrowed features of Indian Constitution career launcher, you will get this. ये जरूर देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में, that this thing has been borrowed from where, this thing has been borrowed etc and all, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, देखो this is the US Constitution, है ना, US preamble I would say, and this is Indian preamble, ये वाला. In fact, if you see it, the beginning line, the both begin with the same statement. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है? We the people of USA. और अगर आप यहाँ देखोगे, if you see our constitution, it says we the people of India. तो अब गौर से भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ एकदम बहुत हद तक वहीं से कॉपी किया गया है. Then the next thing, if you see it, देखो इसमें भी ideals of the constitution mentioned है ना. यहाँ अपना उन्होंने justice लिखा, tranquility, defense, etc. अपना liberty, है ना. So these are the words they are mentioning. What we call it as ideals of the preamble. यहाँ पे भी sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity. So both the preambles are reflecting the ideals of their constitution. Ideals का मतलब होता है कि क्या अचीव करना है, ये हमारा गोल है ना. आइडियल्स मींस भारत का संविधान जब चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सब इंश्योर किया जाएगा, है ना, कि समाज में ये सब रहे, है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एटसेट्रा एंड ऑल. सो सेम थिंग, दे हैव आल्सो गिवन द कांसेप्ट ऑफ देयर आइडियल्स इन द प्रीएम्बल. ठीक है, ओके.
Now let's move on further. The next is, अच्छा एक चीज मैं क्वेश्चन पूछूं, although it is not directly linked with preamble, but this is a previous year question of some exam. I think MH set में पूछा था या जामिया में पूछा था. I don't recall exactly, but either of the two exams asked this question. Who was the primary author of US Declaration of Independence? I'm asking it because we are discussing about preamble, which we have borrowed from USA. तो जब यूएस से हम लोग प्रियम्बल बोरो किए हैं, तो जब यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले, मतलब जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आया, बट यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय होम? व्हाट इज द राइट आंसर? एंड व्हाट इज लाइक डेट बताना है when actually the US Declaration of Independence was signed. Yes, I had got one right answer only, and that person has deleted the answer. I don't know why. Yes, Priyanshi Goel, you're right. The right answer is Thomas Jefferson. B is the right answer to this question. जो भी आप आंसर लिखा करो, you should be confident. ठीक है? So B is the right answer. He was the primary author of Declaration of Independence. और ये एग्जाम में पूछा हुआ, this is a previous year question, so that is why I'm repeating it. Because होता क्या है? If they are asking in one exam, they copy it in other exam. ये सब भी होता है. Previous year question gets copied from one exam to other. तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए. तो ये US Declaration of Independence है. डेट किसी ने नहीं बताया. Thomas Jefferson was the main author of this US Declaration of Independence, and it was signed on 4 July 1776. आपको पता होगा, I hope you are aware that they celebrate 4th July as Independence Day, because 4th July 1776 is their Independence Day. Like we celebrate on 15th August, जिस तरह हम लोग 15 अगस्त को आजादी का दिन मनाते हैं, something similar to that they celebrate on 4th July, US Declaration of Independence. B is the right answer. Okay. ठीक है. सो बेसिकली आप देख सकते हैं आंसर, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 फिलाडेल्फिया में हुआ था एक्सेट्रा उस टाइम पर, एंड 13 कॉलोनीज रिगार्डेड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन एक्सेट्रा. तो उस जमाने 13 कॉलोनीज होती थी. ब्रिटिश जो है ना, शुरू में ये लोग यूरोपियंस गए, यहाँ पे गए, एंड दे सेटल्ड इन द ईस्टर्न 13 कॉलोनीज, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका कॉल्ड एज 13 कॉलोनीज. आपने पढ़ा होगा कि 13 कॉलोनीज थी ये जो ईस्टर्न वाले, और इसीलिए दैट इज व्हाई वी हैव 13 स्ट्राइप्स. ये टोटल 13 होता है. आप देख लो, रेड व्हाइट काउंट करोगे तो 13 is there in the US flag, and the reason is originally there were 13 colonies in Eastern America from British. ठीक है, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में, इसीलिए 13 स्ट्राइप्स होते हैं, और ये 50 stars tell the 50 states. आपको पता है ये बात? Do you know this of 50 provinces? ठीक है, तो जस्ट हैव एन आइडिया, बिकॉज़ इस तरह क्वेश्चन कभी-कभी इधर-उधर आ जाता है एग्जाम से, एक क्वेश्चन कि चलो ये बताओ कि 30 स्ट्राइप्स का है एक्सेट्रा, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. नाउ लेट्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीएम्बल, सो लेट अस टॉक फर्दर अबाउट प्रीएम्बल. तो हम लोग प्रीएम्बल के बारे में और जानते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ प्रीएम्बल? प्रीकर्सर समझते हो? व्हाट इज प्रीकर्सर? मींस द सेम थिंग, आई मीन द थिंग which was doing the same job, है ना. It was before preamble and it was doing the same job more or less. उसको precursor कहेंगे यहाँ पर, है ना. So objective resolution, instrument of instruction, own Swaraj resolution, cabinet mission resolution. What is the right answer? Preamble से पहले जो preamble का काम कर रहा था वो क्या था? Yes, Kushagra Saxena, very good. Anusha Kansal, but why you are putting question mark? Be confident. Yes, Adrija. आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे, आपको एग्जाम आंसर करना होगा, तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे, आपको तो कॉन्फिडेंटली आंसर करना है. सो बी कॉन्फिडेंट ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन. मैं देखता हूँ कई बार कि कोई बच्चा सही आंसर करता है और बाकी 3-4 लोग गलत कर रहे हैं, तो उसको देख करके डर के वो डिलीट कर दे रहा है आंसर. आई मीन प्लीज डू नॉट डू इट. बी कॉन्फिडेंट. हाँ, तो द राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या है? व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? इट वाज प्रीकर्सर ऑफ समथिंग. इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ व्हाट? क्या चीज का प्रीकर्सर है? Yes, Adrija, Pranchi, all right. So A, objective resolution was the right answer. तो ऑप्शन बी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो क्या चीज का प्रीकर्सर है? Indian Constitution interpretation. Kushagra, you have tried to answer it, like you have reached near to the answer, but not exactly the right answer. DPSP. Yes, Priyanshi, very good, great. It's actually a precursor of directive principle of state policy, and this was mentioned in Government of India Act 1935. ठीक है.
we had taught about गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसमें ये मेंशन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपको डीपीएसपी क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन है ना, नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन है, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, है ना, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स, है ना, नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन या एडवाइसेस, ये भी उसी तरह की बात हो रही है ना। So that was there and they have it has been copied there. So B is the right answer. ठीक है, I hope you are aware of that. और एक चीज और बता दीजिए, I'll be asking what is option C, पूर्ण स्वराज resolution, because this is also very important. What is this? Can anyone tell me what is पूर्ण स्वराज resolution and why it is so significant even today? इसका आज भी कुछ significance है. What is that? Anyone? Declaration of 1930, complete independence. Yes, Priyanshi, you both are right. Date, exact date बता दो. Pandit Nehru, 1930, Lahore. Yes. So basically, December 1929, Lahore session happens, where the Congress, Indian National Congress, decides that they will be celebrating next month, that is 26 January 1930, as Poon Swaraj Day or Complete Independence Day, and that is why today also 26 January 1950 was ensured that full constitution should be enforced on this day. Although we had made the constitution by 26 November 1949, आपको सब पता होगा, but still we waited for 2 months etc. ठीक है, तो उस दिन को याद करने के लिए, just to remember that 26 January 1930, 26 January 1950 was chosen as the date for full implementation of constitution. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, and that is why I have said even today we celebrate 26 January as Republic Day. इसका आज भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। यस कुशाग्रा, वी आर कमिंग टू दैट, ठीक है, व्हाट यू आर आंसरिंग, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस, डीपीएसपी एटसेट्रा, है ना। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, हां इसका आंसर करो, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय डैश ऑन 13 दिसंबर 1946। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, Mahatma Gandhi, Bhimrao Ambedkar. What is the right answer? Yes, Priyanshi Goyal, Kushagra Saxena, Anusha Kansal, you are right. Yoyaz Nut, you are right. The right answer is Jawaharlal Nehru. B is the right answer to this question. है ना? So objective resolution is set of principle guiding the draft of Indian Constitution, है ना, दिसंबर में। तो हुआ ये था कि अगर आप देखोगे जो जिस तरह से लैंग्वेज प्रीएम्बल में लिखी, समथिंग सिमिलर लैंग्वेज इज देयर, है ना, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक, नॉट एग्जैक्टली सेम, देखो है ना, पोजीशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बेसिक फ्रीडम, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल कम्युनिटीज, पुअर, इसके लिए वर्ड जो है सोशल जस्टिस वर्ड मेंशन्ड है ना, राइट, मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं मेंशन है, बट द वर्ड सोशल जस्टिस मेंशन्ड, इक्वालिटी इज मेंशन्ड देयर इन द प्रीएम्बल। तो ये सब जो की वर्ड्स हैं इस तरह के, देखो सॉवरेन वर्ड, so these words were present in objective resolution also, and it has been with changes it has been brought in the preamble, ठीक है, उसी टाइप की चीज से बस उसको चेंज करके preamble बना दिया गया। yes, that is what you should be knowing about, है ना, 13 December 1946, ये सब एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, so I believe that you should be knowing। असेंबली ने फाइनली 22 जनवरी 1947 को ये सब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया ना, objective resolution was adopted on 27 January 1947 after almost 1 month. The next is, let us talk about this. How many keywords were added later on and were not present originally in preamble? Okay, now you have to tell me. अच्छा एक चीज और है, tell me all those words, उन सारे words को ही बताना है, वो कौन से words हैं, and which amendment, ये भी बताना है। अरे मैंने बताया भी है। Yes, very good, 3. Yes, Kushagra, Anusha, Pranshi, Anamika, you all right. Priyanshi Goyal, you all right. So 3 नए वर्ड ऐड किए गए, उन तीनों का नाम बताना है और कौन से अमेंडमेंट से आया ये भी बताना है। Which amendment brought this and which are those 3 words? अब तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। Socialist, secular, integrity, 42nd. Yes, Priyanshi Goyal, very good. Anusha Kansal, Kushagra Saxena, you all right. Socialist, secular, integrity, and brought by 42nd amendment. Yes, Yoyaz Nut, Priyanshi Goyal, अनामिका, you are right. आप देखो जाके, मैंने ये बताया भी था, बट लेट मी शो इट अगेन। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ लिखा, ये ओल्ड वाला है, ठीक है, दिस इज न्यू वन। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखोगे सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड वेर एडेड, जो कि यहाँ नहीं मेंशन्ड है। सिमिलरली अब नीचे आओ, यहाँ लिखा यूनिटी ऑफ द नेशन, राइट,
एंड हियर अगर पढ़ोगे तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड इंटीग्रिटी, ठीक है ना। एंड को ऐसे वर्ड नहीं माने, की वर्ड तो तीन ही होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। सो दैट इज व्हाट दीस वर द थ्री वर्ड्स दैट वर नॉट प्रेजेंट ओरिजिनली बट वे आर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। मैंने पूरी क्लास दी 42nd अमेंडमेंट पर, प्लीज गो एंड वॉच इट। इसको सर्च करना 42nd अमेंडमेंट करियर लॉन्चर, यू विल गेट दिस वीडियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेमसली कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है, ठीक है, that can be asked. 42nd amendment is very very important, so please go and watch it. It happened actually, it changed a lot of things during the emergency time, and that is why 42nd amendment is regarded as mini constitution. उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज किया गया था जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ओके, let's move on to the next one. Which of the following ideas is not mentioned in the Indian preamble? गौर से पढ़िएगा, प्लीज रीड इट। मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा है किसी किसी एग्जाम्स में, I have seen this type of questions in some exam. हो सकता है पूछ ले इस तरह क्वेश्चन, which of the following ideas is not mentioned? Be careful, पहले तो आपको यहाँ ध्यान देना, ठीक है। Political justice, equality of opportunity, liberty of worship, equality of outcome. Sir, please suggest CLAT special topics for GK. देखो प्रणशी, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना हिस्ट्री की, देखो इस बार भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर, ठीक है। एक तो है कि आप जो है यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे पहले एक बार जलियांवाला बाग मैसेकर पे भी पूछा था, तो एक बेसिक हिस्ट्री पढ़िए अगर स्टैटिक आप पूछ रहे हो, अदरवाइज करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, गवर्नमेंट कैन इंश्योर इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कांट इंश्योर। यस, प्रियांशी गोयल, प्रांशी गोविल, अनुषा कुशाग्रा, योजना, अनामिका, त्रिजा। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, yes, equality of outcome का concept ना थोड़ा सा मार्क्सिस्ट आइडियाज है, ठीक है। so this is the right answer, ये नहीं प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे क्या लिखा है, पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन है, देखो जस्टिस कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मींस सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। दूसरा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दो तरह की इक्वालिटी मेंशन, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके। फिर तीसरा लिखा है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, देखो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप सब मेंशन्ड है, ओके। बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स नहीं, सिर्फ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि सबका रिजल्ट इक्वल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो थोड़ा सा मार्क्सिस्ट फिलॉसफी होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज समथिंग लाइक दैट कि नर्स को और डॉक्टर को सैलरी इक्वल मिले, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। आउटकम कैसे बराबर करा दोगे, लेकिन ना ऑफ कोर्स देयर कैन बी हायरार्की, द कांसेप्ट एंड नॉट दिस लेवल ऑफ इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल। Sir, any global summit that had happened in 2025? Yes, there are a lot of global summit. This is the World Economic Forum की global summit हुई, and AI summit वगैरह हुई है, ठीक है। Now let's move on to the next one. The concept of state requires what? Why am I asking it? Because इसके कुछ keywords जो हैं वो preamble में mentioned है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ so that you will get to know about what is the definition of state, plus you will get to learn the words that are mentioned in the preamble. स्टेट, कोई स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पर प्रोविंस की बात नहीं हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग वो वाला स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पर हुकूमत, गवर्नमेंट की बात हो रही है, दैट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। What should be the answer? I know it's slightly difficult, but if you answer it, I'll be very happy to know. Ocean Summit, अच्छा मैं देखता हूँ, discuss. What is the right answer? Yes, Yoyas, Nut and Dia, you both are right. Anamika Grover, great. TPGS, territory, population, government, sovereignty. If four things are there, and it will be considered as a state. मतलब government, हुकूमत. Territory, मतलब कोई fixed territory हो गया, अच्छा ये वाले boundary है. Population, वहाँ लोग रहते हैं, of course, without people, there should be a government and it should be sovereign. Sovereign government का मतलब होता है internal and external decision should be taken independently, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा है We the people of India, ना, so sovereign है, India is sovereign after 15th August 1947, है ना। So we will take our own decision. The British or anybody else will not take decision. ठीक है, so जनता खुद decision लेगी, मतलब government decision लेगी, of course on behalf of जनता, on behalf of the citizen. ठीक है, so these words you should be knowing, which is required. अब बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता है, देखो independent foreign policy, ये sovereignty के अंदर ही आता है। Diplomacy, independent diplomacy, that comes under sovereignty. ठीक है, सब कुछ आता है, मिलिट्री सब उसी में आएगा, ठीक है। सो द बेस्ट आंसर इज दिस, और ये मोंटेविडियो कन्वेंशन में एग्रीमेंट फाइनल किया गया था। मोंटेविडियो इज अ प्लेस इन
Uruguay, there the definition of a state was accepted, which includes TPGS, territory, population, government sovereignty. ठीक है, please remember it. ये कभी कभी मैंने देखा है in some government exam, I have seen this question. कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखा है मैंने, और इसलिए भी मैंने बताया कि ताकि सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन. तो सॉवरेन समझ गए. सॉवरेन मींस जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन गवर्नमेंट खुद से ले, है ना. सो सॉवरेन मींस फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद इन इंडिया. इंडियंस के लिए लॉ बना सकती. आउटसाइड इंडिया के लिए इंडियन डिप्लोमेसी, वी कैन टॉक टू एनीवन विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एनी अदर कंट्री. तो आउटसाइड सॉवरेनिटी भी हुआ. इंडिया चाहे जिस कंट्री से चाहे बिजनेस डील साइन कर सकते हैं और उस पर किसी और का प्रेशर नहीं होगा, ये मतलब है. हाँ, नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय फॉरेन पावर, राइट, कुछ अगर. सो दैट इज द आइडिया ऑफ सॉवरेन, फुल्ली सॉवरेन, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. खैर, अब विल डिस्कस अदर कीवर्ड्स आल्सो. अब बाकी सब वर्ड्स जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. जस्ट वेट. The next is, which of the following of the Indian Constitution reflects the idea of socialism as mentioned in preamble? देखो, मैंने आपको कई बार बताया कि preamble is just symbolic in nature. It is not enforceable as such in the court of law. मतलब उसकी वर्ड्स जो है ना, उसको enforce सिर्फ preamble के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, है ना. So basically we say that the ideals of preamble are non-enforceable independently of other parts. अदर पार्ट्स. प्रीएम्बल जो आइडियाज मेंशन वो बस रिफ्लेक्ट करता है, एक समरी है. अगर उसको इन्फोर्स किया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा इसलिए इंडिया सॉवरेन नहीं है, तो बस सिंबॉलिक है. इंडिया सॉवरेन है बिकॉज की बहुत सारे गवर्नमेंट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडिया इंडिपेंडेंट इलेक्शंस एटसेट्रा. ये सिर्फ एक सिंबॉलिक. तो वही मैं बता रहा हूँ कि सोशलिज्म मेंशन तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है जहां से आप इन्फोर्स करवा सकते हो? प्लीज टेल मी. Part 4 DPSP. Yes, Diya, you're right. The right answer is B. Yes, Priyanshi Goel. ये है DPSP, Directive Principle of State Policy. Option C is Fundamental Duty. Yes, Anusha Kansal, right. So DPSP में बहुत सारी चीज जो सोशलिस्टिक है ना, आर्टिकल 39 BC, मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना. So we have already discussed. इसको चाहे तो गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है by making laws like we had seen land reforms, zamindari acts were passed. Not only that, 25th amendment were passed which made 39 BC above article 14 and 19. ये सब हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है ना. So the answer is option B, है ना, option part 4 DPSP. ठीक है, that is what you should know. So parts of the Indian Constitution मैंने already discuss किया, आप सर्च करना, you will get this, go and watch it. तो आपको ये पता होना चाहिए पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटी एंड पार्ट 4 इज डीपीएसपी. दैट यू शुड नो. कुछ प्रोमिनेंट पार्ट्स जैसे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये सब पता होना चाहिए. अगर सारे नहीं याद है तो भी, इफ यू डू नॉट रिमेंबर ऑल द 25 पार्ट्स, रिमेंबर पार्ट 3, 4, 4A, ये सब तो पता होना चाहिए एटलीस्ट. These you should remember. The next is the ideals of liberty, fraternity and equality has been taken from where, which is mentioned in the preamble. German Constitution, US Declaration of Independence, Napoleonic Codes, French Constitution. मेन ओरिजिनली कहां से लिया गया है? एक्चुअली ओरिजिनली जो लिया गया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है ना, which is now in French Revolution. 14 जुलाई 1789, storming of Bastille Fort, NCERT book में लिखा है ना. And that is why they celebrate Bastille Day, 14 July. And I think 1 or 2 years back, Honorable Prime Minister PM Modi was invited there on 14 July. तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी वहीं से दिया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. सो मेन आइडियाज डी. यस, अनामिका, जोया, फ्रांसी, देगा, यू आर राइट. सो हम लोगों ने यहां से लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी. ओके, नाउ द कांसेप्ट ऑफ जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर? ये बताओ. यूएसएसआर, दैट इज सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ अफ्रीका. I still remember some classes back I had discussed this. हमको याद आ रहा है कि कुछ क्लास पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया था. So I'm basically asking about this one, ऊपर वाला justice, जो रेड से मैं बता रहा हूँ. Because liberty, equality, fraternity taken from French Constitution. What about justice? Yes, yes, not you are right. Priyanshi Goel, you are also right, but you are putting question mark. You should be confident. This is Soviet Union.
और मैंने आपको बताया था रीजन भी कैसे याद रखना है। यस दिया, यू आर आल्सो राइट। देखो सोवियत यूनियन वाज एक्चुअली सोशलिस्ट, कम्युनिज्म था, सोशलिज्म का आइडियाज होते हैं। सो दे टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, ऐसे याद रखना, यू कैन रिमेंबर। हाँ अब देखो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिखा है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस सोशल जस्टिस, it means economic justice, and it means political justice. ठीक है, अब देखो होता क्या है ये वाला जो सोशल जस्टिस से तो आप एटलीस्ट कनेक्ट करते हैं, अच्छा सोशल जस्टिस तो सोशलिज्म ही में होता है ना, ऐसे भी सोच सकते थे, है ना। सो सोशल जस्टिस मींस, है ना, स्पेशली केयरिंग जस्टिस टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस, फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन एटसेट्रा, है ना, और एटसेट्रा एंड ऑल। फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस तो खैर ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस को अभी वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट विद द हेल्प ऑफ सोशल जस्टिस यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट, ठीक है। फिर द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949। क्या सी जवाब? कौन सा डेट्स मेंशन्ड है प्रीएम्बल में? And I'm expecting everyone to answer. मतलब ये तो पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। Yes, प्रियांशी गोयल, दिया, प्रांशी गोबिल, कुशाग्रा, कुसुम रानी, योयास नट, you are right. 26 November 1949 is the right answer. And here it is, 26th November 1949 is mentioned here, है ना, नीचे में third last line you can see. Now the next question is, हाँ एक चीज और है, ये वाला भी याद रख लीजिएगा, ये नीचे में जो मैंने लिखा था 14 September 1949, 14 September is celebrated as Hindi Day. Because 14 September 1949, Hindi was passed in the Constituent Assembly as official language, है ना। OL मतलब official language, ठीक है। हाँ 14 September, Constituent decided that Hindi would be the official language of the central government. The next is the Constitution of India was adopted and enacted on 26 January 1950. 26 November 1949, 15 August 1947, 14 September 1949. Now let me see how many of you can answer. Read the question carefully and answer me. I have already given you the answer. If you have watched my entire class carefully. अपना आंसर कीजिएगा, दूसरे का कॉपी करके नहीं। Yes, Diya and Kusum Rani, you both are right. B is the right answer. अब गौर से पढ़ो, नीचे क्या लिखा? In our constituent assembly, the 26th November 1949, do adopt and enact and give to ourselves. क्या होता हुआ? So it was adopted and enacted on 26 November 1949, but it was fully enforced, है ना? Fully enforced. All the provisions of the Constitution fully enforced on 26 November 1949. Now, why we waited for 2 months? I have given you the answer. The reason for waiting for 2 months is to ensure to remember 26 January 1930. इसको याद करने के लिए. That is पूर्ण स्वराज resolution, which we have discussed in the beginning of the class. ठीक है, इसे 2 महीना वेट किया गया. So this is Republic Day. We celebrate, and this is celebrated as. It was earlier celebrated as Law Day. Now it is celebrated since few years back. We have changed it to Constitution Day. Okay. So here the right answer is B. Is it clear? Is it clear? Hai? B is the right answer. Let's move on further. Let's talk something about historical background. अच्छा, आप ये बता सकते हो जो ओरिजिनल प्रीएम्बल और किसने लिखा था? Who had written this? और इसके बगल में जो है ना कैलीग्राफी वगैरह सब किसने किया था? जो डिजाइन वगैरह, can you please tell me? I'll be very happy to know. तो बता सकते हैं? So we are talking about objective resolution and all, and then preamble came and Bhimrao Ambedkar said this about preamble, है ना? Equality, he talked about equality, liberty, etc. So ये सब उन्होंने बताया था. ठीक है, शुरू में बात हुई थी कि गॉड या गांधी वर्ड मेंशन किया जाना चाहिए, बट दीज आर नॉट मेंशन्ड एंड ऑल ओरिजिनली, है ना। ठीक है, फिर शुरू में सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने की बात की थी, सो लेटर ऑन इट वाज नॉट एडेड एंड ऑल, बट
this was not added. So later on, like after constitution was formed in 1976, actually the word socialist was added. खैर, तो नाम में आपको याद रखना होगा, ओरिजिनली डेकोरेटेड बाय ब्योहर राम मनोहर सिन्हा of जबलपुर, who was at Shanti Niketan, and Acharya Nandlal Bose. Calligraphy by Prem Bihari Narayan ji. Very good. Priyanshi Goel and Diya, you both are right. और कैलीग्राफी जो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने किया है. तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो लिखा है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, उनके सिग्नेचर भी है नीचे में, नीचे यहाँ पर राइट में राम लिखा हुआ भी, ठीक है, नीचे बॉटम राइट में यू विल सी हियर इट इज रिटन राम आल्सो, ठीक है. तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है. ये जो राइट साइड में कैलीग्राफी आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली डन बाय प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है, और डेकोरेट ग्राउंड पीटर बिहार राम मनोहर सिन्हा और आचार्य नंदलाल बोस, ठीक है. ये पता होना चाहिए. दिस वाज द थिंग. नाउ द क्वेश्चन इज preamble a part of the Indian Constitution, yes or no? प्लीज टेल मी. करंटली आज के दिन का स्टैंडर्ड बताना. Is it a part of Indian Constitution? Yes or no? And why? Give me the logic, reason, argument, kuch. If you give me the reason or logic, I'll be happy. Yes. So basically it is true. It is a part of Indian Constitution. Who said this? Where it is written? कहाँ ऐसा बात लिखा हुआ है कि preamble part है? So basically there were debates that happened in the Supreme Court actually. So in one judgment, in earlier judgment, the Supreme Court had said that preamble is not a part of Indian Constitution. Yes, Priyanshi, very good. You're right. Actually, हाँ, Supreme Court ने कहा था, but आपको ये बताना है कौन से पहले एक जज बेंच में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं preamble part नहीं है. So in which judgment Supreme Court said? Yes, Priyanshi, you're right. Berubari Union case काफी famous है ना? So it was actually a small dispute, land dispute between India and Bangladesh. ठीक है? Yes, Priyanshi Goel, you are right. Berubari Union case of Supreme Court ने कहा it is not a part of preamble, but later on Supreme Court said that yes, it is a part of. It is actually the part of, not exactly. Actually, one is the part of Constitution. Preambles की जो ideals हैं, है ना? These are basic structures. है ना? जैसे secularism, federalism, etc. ये सब जो words हैं, justice, etc. These all are part of. और preamble as such खुद basic structure नहीं, it's a part of the Indian Constitution. But of course, this was said by Supreme Court in which judgment? Kesavananda Bharati case. Supreme Court said preamble is a part of Indian Constitution. ठीक है? Is the right answer. Yes, Pranshi Govil, Diya, Yoyasnat, you are right. ठीक है. Originally, Supreme Court ने पहले कहा था कि बेरोबारी केस में it is not a part, but later on it said that it is a part of the Indian Constitution. Now the question is, can preamble be amended after 42nd Amendment? पहले आप ये बताओ, what is the current position of the Supreme Court in this regard? Because 42nd Amendment we had seen 3 words, socialist, secular, integrity getting added. उसके बाद after that, what should we say? Should we say that now it has allowed, Supreme Court has allowed, or stopped? Can it be amended? Yes or no? क्या इसको अब चेंज किया जा सकता है? So today if the parliament comes and wants to change the preamble, yes or no? Please tell guys in the comment. सिर्फ एक आंसर. हाँ, इसीलिए मैंने इसको करेक्ट किया था, वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है. Yes, it can be amended. ठीक है? Yes, you was not. इसलिए मैंने इसको करेक्ट यहाँ काट के करेक्ट भी किया था. ठीक है? So I'll tell you what exactly is the case. देखो, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे इस preamble बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये कह देगा yes. But ये एकदम क्लियरली नहीं है, और लिखा हुआ है and cannot be altered through amendment. No, it is wrong. So you should know that Google will not always be correct. ठीक है? Similarly, जब आप ये सर्च करोगे preamble is not a basic structure, तब लिखेगा why preamble is considered an integral part, it is not a source of direct basic structure. तो let me clarify. हुआ ये था कि आपको पहले समझना, if preamble is a part of basic structure, then it cannot be amended. Yes? तो आप change नहीं कर सकते उसको. But the Supreme Court had said in Kesavananda Bharati and other case that yes, it is a part of the Indian Constitution.
it can be amended. इसको चैलेंज किया गया था. The Supreme Court had said yes, it can be amended. So when it can be amended, it must not be a part of basic structure. तो उन्होंने कहा था कि इसके जो ideals है, these are part of basic structure. उनके अंदर जो ideals mention है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए एक preamble में amendment ला करके secular word हटा दिया गया, so it can be removed, yes, but originally the words, even if you are removing it, the preamble can be amended, but secularism as a principle cannot be destroyed by actually the parliamentary amendment and removing preamble. Why? Removing word from preamble. Because the Supreme Court has said in S.R. Bomai case that secularism and federalism is the basic structure of constitution. आपको ये concept समझना पड़ेगा. Preamble को amend किया जा सकता है. Yes, it can be amended. Okay. So is preamble as such directly part of the basic structure? If you say yes, then it is wrong. आप ये कह सकते हो कि the ideals mentioned in the preamble are part of basic structure, but as such, preamble, the words of the preamble can of course be changed, inserted, removed, etc., which is not going to impact the enforcement of law at the practical level. अगर ये word secular add भी कर दिया गया, ये remove भी कर दिया गया, socialist word add किया गया, remove किया गया, इसको फर्क नहीं पड़ता है ना. That is why I had said that it has no enforcement independently of other parts. ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था. Preamble is non-enforceable independently of other parts. पता क्या हुआ? ऐसे जनरली नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन बाकी पार्ट्स इंडिपेंडेंट होकर. हाँ, लेकिन अगर बाकी पार्ट्स देखोगे तो सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन वर्ड इज देयर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, सो दीस आर प्रोवाइडेड. जैसे अगर आप पढ़ोगे जस्टिस वर्ड, आर्टिकल 15, 16 ऑल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट जस्टिस, है ना. लिबर्टी, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यू गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर. सो ऑफ कोर्स प्रीएम्बल कैन बी चेंज्ड, याद रखिएगा. ठीक है. अच्छा, अभी एक दो क्वेश्चन है. वी हैव डिस्कस सॉवरेन, सोशलिस्ट मैंने बताया जो we had already discussed that Soviet Union से we have taken this concept of social justice and all, है ना. मतलब ये कि focus on reducing, minimizing concentration of wealth, talking about poor, minorities, weakers, tribal people, women, physically disabled. Secular means the government should be treating people of all religion equally, है ना. Democratic we have done that, democratic like there should be elections and all free and fair. What is the meaning of republic then? इसका क्या मतलब होता है? Can you tell me? What is the meaning of word republic? Yes, Kushagra, very good. Head of the state. So in case of India, the head of the state is president, is elected, which is not the case in England. अगर आप UK में जाओगे, so there is no republic. Elections happen for prime minister, but there is no election for the king or queen. So that is why we use their word constitutional monarchy. उनके लिए constitutional monarchy है, but in India we have republic. Yes, I hope it is clear. ठीक है. So वहाँ democracy है. Democracy is there in UK also, but republic नहीं हुआ ना, because the head of the state is king, which is non-elected. Constitutional monarchy. Yes, Kushagra, very good. तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. यू शुड नो. जस्टिस पता हो गया, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी. फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ये आपको पता होगा. यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. So basically I have done all those things related with preamble. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.